बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने आज ये पूरा एक सेशन रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर, और आई होप ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डूइंग देयर बेस्ट एट होम। हम कोशिश करेंगे जो हमारे लेक्चर्स हैं इसके अंदर तमाम तर चीज़ें जो हम शुरू से पढ़ चुके थे एंटिल एंड, सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से उसका ओवरव्यू लें एंड पूरा कोर्स इंशाल्लाह लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करें। So this is our first lecture. It will be all about introduction. So this first slide, introduction to statistics. There are three kinds of lies: lies, damn lies, and statistics. ये एक साहब हैं, उनकी एक थ्योरी कह लें या उनकी लाइन कह लें, ही सेज के तीन किस्म के झूठ होते हैं। एक झूठ होता है, कोई बहुत ज़्यादा झूठ होते हैं, और आखिरी में स्टैटिस्टिक्स होता है। क्योंकि जो डाटा हमारे पास होता है, डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड, इट कैन बी चेंज, और उसके थ्रू हम बहुत सारी कंक्लूजन बना सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको बिल्कुल शॉर्ट करें तो जो हमारे पास डाटा होता है ये बहुत सारी कंक्लूजन को बनाता है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग हमारी डाटा बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, इन दिस पैंडेमिक कंडीशन हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स आर doing lockdown, extreme lockdown, smart lockdown, partial lockdown. Some of them are implementing curfew system and various other system are being implemented in the whole world. तो ये जो डेटा आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ केसेस विच आर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द मंथ, और फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन अ डे, नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन एन एरिया, उसको देखते हुए फिर हम ये सारा का सारा अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर डाटा आपके पास सही ना हो, डाटा आपके पास गलत हो, तो इसमें बहुत सारे लाइज हम या बहुत सारे झूठ हम बोल सकते हैं, और उस बेस पे डिसीजन मेकिंग हमारी होती है। सेकेंड थिंग जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमको देखना भी चाहिए कि वेन एवर वी आर कलेक्टिंग डाटा, हम इंशाल्लाह इसको आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर इन अदर लेक्चर्स भी हम इसको देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ डाटा हमारे पास होते हैं। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनको हम सेकेंडरी कहते हैं, सम ऑफ द डाटा आर प्राइमरी डाटा, और मेजॉरिटी ऑफ द डाटा जो है जो कलेक्ट होता है हमारे पास वो प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा जो है हमारे पास कलेक्टेड डाटा होता है। सो वो डाटा को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, उसको चेंज भी किया जा सकता है, उसके थ्रू बहुत सारी जो डिसीजन मेकिंग है हमारी उसको हम इफेक्ट कर सकते हैं। इन दिस पैंडेमिक सिनेरियो, कुछ गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। फॉर इंस्टेंस, उन्होंने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगा दिया। इन सम एरियाज दे इम्प्लीमेंटेड lockdown from some hours, like 8-hour lockdown or 10-hour lockdown or 12-hour lockdown, and in some areas everything was open. तो ये सब डिपेंड करता है बस डाटा पे। आप रेगुलर देख रहे होंगे कि जो भी टीवी चैनल्स हैं या इवन जो हमारे पास सिनेरियोज आ रहे हैं उसके अंदर रोज अपडेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन पाकिस्तान, नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन यूएसए, नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन यूके, और उसकी बेस पर जो है वो गवर्नमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग कर रही है। तो अगर हमारे पास डाटा करेक्ट ना हो, डाटा में इशू हो, तो बहुत सारे झूठ हम बोल सकते हैं। सो व्हाई शुड वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स, मतलब हम क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़े? देयर आर थ्री मेन रीजंस। फर्स्ट इज डाटा आर एवरीवेयर। हर जगह हम देखते हैं आपको वो डाटा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, हम किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, देन उसको और हम डिवाइड करें डाटा को। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी बॉयज आर स्टडिंग, फिर और डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल, कहाँ कहाँ से एरिया से हमारे पास बॉयज आ रहे हैं या कहाँ कहाँ से हमारे पास फीमेल्स आ रही हैं। सो एवरीवेयर वी हैव डाटा, और उस डाटा को यूज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, इट सेज स्टैटिस्टिक्स techniques are used to make many decisions that affect our lives. As I said earlier, majority of the governments nowadays are dependent on data, on stats, on the data which are coming every day. At the end of the day, how many cases are reported or how many cases are affected, how many deaths have occurred, and so on. So majority of the decision, but I would say 99 to 98% decisions are made on data, and that is why statistics techniques are used to make many decisions that affect our life. आप देख रहे होंगे अभी मौजूदा कंडीशन के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी एग्जांपल्स ऐसी अवेलेबल हैं कि जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारी लाइफ्स को बता रही है। फॉर इंस्टेंस, नंबर ऑफ या लीटर्स अवेलेबल, नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, या हम दूसरी कोई एग्जांपल ले लें इसके अंदर। ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है।
Third thing, the third reason why we study statistics, no matter what your career, you will make an professional decision that involve data. Understanding of statistical method will help you make these decisions effectively. For instance, आप कोई भी करियर में हो, हम बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की, हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंट्स की, हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, या अदर प्रोफेशनल जो अभी करियर में है, तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ओके, सो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास सारी डिसीजंस जो हो रही हैं वो चाहे वो करियर रिलेटेड हो या फॉर एग्जांपल डेली लाइफ से रिलेटेड हो, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स पे बेस करती है। प्रोफेशनल डिसीजंस भी आपको कहते हैं स्टैट्स को देखते हुए डिसाइड करना होता है। सो नेक्स्ट, what are the applications of statistics in the business world? So we have applications in finance, we have applications in marketing, we have personal applications, and then we have operating management. So if we go to finance, then we calculate correlation and regression, index numbers, time series analysis. Some of the things we will be doing in our upcoming lectures, and majority of the things we will be covering in our next semesters. Then we have marketing, for example, hypothesis testing, chi-square test. These all are tests that you will be doing later on. Then we have personal things, which is also based on hypothesis testing, chi-square test, non-parametric tests, and others. And in operational management, we have also hypothesis testing, estimation, analysis of variance, and time series analysis. So these are all the applications which are used in statistics, and we use all of them in this current scenario, even not in the current scenario, in upcoming days, in future and past, so that we can decide on decisions. So next, so what is statistics? The science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data to assist in making more effective decisions. So it is coming in your on your slide. You can see on your screen. So there are five main important points over here. Statistics is the science of collecting. It says that you have to collect first, then you have to organize, then you have to present, and then you have to analyze, and in the end we interpret data to assist in decision making. इसमें से कोई भी एक हमारा चीज हम मिस करते हैं तो डेटा के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जाम्पल, हमने डाटा ही कलेक्ट सही नहीं किया, हमें जिस एरिया का डाटा कलेक्ट करना था हमने गलत एरिया का डाटा कलेक्ट करा। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, हमने पेपर पे डाटा कलेक्ट करा, उसको प्रॉपरली हम सॉफ्टवेयर पे अपडेट नहीं कर सके। थर्ड पार्ट इज प्रेजेंटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। in the next slides we will see how do we present data. Majority of the things are available like histogram, pie chart, bar graph and others. अगर आप present सही नहीं करेंगे तो फिर again जो हमारी cycle है वो break होगी, and we cannot analyze, and further we cannot see how to have our decision, in fact how to make effective decisions. Statistical analysis used to manipulate, summarize and investigate data so that useful decision making can be made. So what is statistical analysis? It is the analysis where we summarize data. For example, Pakistan has around 22 crore population, as according to our stats that were given in the recent census. We cannot make decisions on 22 crore people in Pakistan, but we can have sample from it and then we can make our decisions. In the second part, we investigate, for example, the data is correct or not, or with the data which we have collected is according to our need or not. If data is according to our need, it is then very well much helpful in our decision making and informating results. So what are types of statistics? So we have
Two types. First is descriptive statistics, method of organizing, summarizing, and presenting data in an informative way. So definition is very important over here. What does it mean? Like, what are the methods to organize? What are the methods to summarize? And what are the methods to present in an informative way? इसमें से कोई भी चीज हम ब्रेक करेंगे, if we break any cycle in it, ultimately we will end up at a losing end. Next is inferential statistics. What is inferential statistics? It says the methods used to determine something about a population on the basis of a sample. Very, very important thing over here. For example, I take an example of a university. We take an example of Karachi University. There are around 20,000 students enrolled, and we need to search about a question, about a query. It is very difficult that we take analysis, we record the data of every 20,000 people. So what we do, based on our population, the population size of Karachi University is, for example, 20,000. We take a sample of 100 people, 200 people, 1,000 people, that depend, and we test and we apply our methods on them on 1,000 people. So what is population? It says here the entire set of individuals or objects of interest or the measurements obtained from all individuals or objects of interest. यानी केस के अंदर हम जब तमाम लोगों को शामिल करते हैं, तमाम वो लोग जो हमारे साथ कंसर्न है, जो हमारे इस डेटा सेट के अंदर आ सकते हैं, that is known as population. I gave you an example of Karachi University. Let's take another example. For instance, हमारे पास, हम किसी हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लेते हैं. रिसेंट सिनेरियो के अंदर, इस पैंडेमिक के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स का डाटा है. किसी हॉस्पिटल के अंदर जो है, फॉर इंस्टेंस 1000 बेड्स हैं, किसी में 2000 बेड्स हैं, किसी में 3000 बेड्स हैं, किसी में 4000 बेड्स हैं, फॉर इंस्टेंस. तो अब इन सारे के सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करना, ये इसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो व्हाट वी डू, वी टेक अ सैंपल, we take a portion of it, we take a part of it, and then we test, we apply methods on that sample, and in the end we determine and make decisions on the basis of sample. There are some queries, there are some issues here, and in the majority of the areas and in the majority of the parts, sample are taking wrong. For example, majority of you might have gone for the test, for the COVID-19 test, and some of you would have been called back that your sample was not good, or it was not according to our mark, or according to our results, or according to our interest that we have put on. So if a sample is wrong, then our analysis, our decision making ultimately goes wrong. So in the end, it is very important that we have proper sample size, proper investigation is done. On that, we can make our decision. So in short, types of statistics, we have two: descriptive statistics, in which we organize and summarize and present data in an informative way. And the second part, we use methods to determine about the population based on sample. Okay, we had a data of 2000 people, 3000 people, 10,000 people. We took a sample from it, we put our test upon it, and then we make some decisions. So this is known as inferential statistics. Moving on, so you can see over here that you have a picture, a diagram over here. It has around like 30 cards. It has around like 30 cards in it, and we have taken a sample from it. Random sampling is be done, and we have taken 6 cards from it. We will apply our methods over it, and in the end we'll see how it works. Inferential statistics, estimate the population mean weight using the sample mean weight. For example, we have 30 to 40 to 50 people in our population set, and we take around 10 to 12 people, even 15 people as a sample. We estimate their weights, their mean weights, their average weight, and then apply, for example, we make a decision in the end that the average size, the average mean, the average weight of this
population is around, for example, 80 kg. Then we have hypothesis testing. For example, we make a claim, test the claim that the population mean weight is 70 kg, and then we apply some test upon it. We will see how do we do hypothesis testing in our later lectures. The last line says inference is the process of drawing conclusions or making decisions about a population based on sample result. So it is very simple. Inference का मतलब क्या है कि आप जो है कुछ सैंपल पे टेस्ट करते हैं और उसके डिसीजन जो है पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं. So next we have sampling. A sample should have the same characteristics as the population it is representing. Very important line over here. अगर हमारे सैंपल के अंदर वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ना होंगे जो हमें पॉपुलेशन के अंदर हो, हमारा सैंपल ही रॉन्ग होगा. ठीक है. Sampling can be with replacement and without replacement. With what does it means? With replacement means a member of the population may be chosen more than once, like picking the girl like picking the candy from the bowl, returning it again. And second is without replacement. A member of the population may be chosen only once. अगर एक को एक बंदा देख लिया, एक बार यूज कर लिया, तो फिर हम उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते. लाइक लॉटरी टिकट एग्जाम्पल है हमारे पास. Sampling methods. So sampling methods can be random. Each member of the population has an equal chance of being selected. ठीक है, सबके पास इक्वल चांस है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैग है, बैग के अंदर वी हैव अराउंड 30 बॉल्स, डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं. इट कैन बी रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज. मैं अपना हाथ बैग के अंदर डालता हूँ एंड आई टुक आउट अ बॉल. तो ये रैंडम है क्योंकि मुझे उसमें सबका चांस है, सारी बॉल्स का चांस है, इक्वल चांस है कि मैं उसमें से निकाल सकूँ. Next line says the actual process of sampling causes sampling errors. For example, the sample may not be large enough or representative of the population. Factors not related to the sampling process cause non-sampling errors. A defective counting device can cause non-sampling errors. So we can have non-sampling और sampling errors. इसके अंदर बहुत सारी problems हमारे पास आ सकती हैं. कभी कभार सैंपल हमारे शायद इतना लार्ज ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन हमारी 2 मिलियन की है, 20 लाख लोगों की है, और अगर हम सैंपल 10 लोगों पे करेंगे तो ये सैंपल बहुत कम है, तो हमें अपने सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा. क्या पता 10 के 10 लोग जो है वो एक कैटेगरी के हों, क्या पता 10 के 10 लोग जो है वो अलग कैटेगरी के हों. तो ये सैंपल साइज छोटा है, हमें इसमें सैंपल साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स है क्या पता वो इसके अंदर एग्जैक्टली करेक्टरिस्टिक्स ना हो. फॉर इंस्टेंस हमें वो वाले स्टूडेंट्स लेने हैं कि जिनके वेट जो है वो लेस देन 70 हो. ये हमारा एक्चुअल इस पर कोई डिसीजन करनी है. अब 70 से कम वाले लोग ही हमारे पॉपुलेशन का साइज होंगे. फिर हम उस पर सैम्पलिंग कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी टेक ओवरऑल. Next we have random sampling methods. A simple random sample. Each sample of the same size has an equal chance of coming. Stratified sample, divide the population into groups called strata and then take a sample from each stratum. Cluster sample, divide the population into strata and then randomly select some of the strata. All the members from these strata are in the cluster sample. And the fourth is systematic sampling. Randomly select a starting point and take every n piece of the data from a listing of the population. तो ये सैम्पलिंग मेथड्स हैं, हमारे पास 4 मेथड्स हैं. सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है, एंड वी हैव सिस्टमैटिक सैंपल. सो नाउ इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर वी हैव कलेक्ट डाटा, प्रेजेंट डाटा एंड देन वी समराइज डाटा. तो हाउ डू वी कलेक्ट डाटा? फॉर एग्जांपल सर्वेस. बहुत सारी जगहों पे सर्वेस हो रहे होते हैं. जो भी अपना कोई थीसिस कर रहा होता है, जब भी अपने को बैचलर्स का, इवन मास्टर्स का, पीएचडी का, तो उसको कुछ एरियाज में सर्वे करना पड़ता है. ही हैज टू और शी हैज टू कलेक्ट डाटा. तो कलेक्ट डेटा के लिए बेसिक चीज है, यू नीड टू डू सर्वेस. इट कैन बी फॉर 200 people, 300 people, 500 people and so on. Then you have to present your data. So how do we present our data? We have tables and graphs. For example, in the coming slides we have histogram, pie chart, we have bar graphs and so on. And the third part is summarized data. What is summarized data? Summarized like the sample mean of the data. Mean can be of anything like weights, height and so on.
Statistical data, so the collection of data that are relevant to the problem being studied and commonly the most difficult, expensive and the time consuming part of the entire research project. पूरा जो research project होता है data collection सबसे ज़्यादा hectic part होती है और सबसे ज़्यादा मुश्किल part भी is your data collection. इसके अंदर statistical data usually obtained by counting or measuring items. We have primary data and secondary data. Basic definition. So primary data are they collected specifically for the analysis desired. Primary data is that कि हम वो कलेक्शन में जाते हैं, कोई हम रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उसको बेस करते हुए जो है ना हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, रॉ डाटा होता है. What is secondary data? Secondary data have already been compiled and are available for statistical analysis. पहले से कंपाइल होता है, मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक की वेबसाइट आप देखें, वहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा, चाहे वो जीडीपी का हो, इन्फ्लेशन का हो, हमारे फॉरेन रिजर्व्स हो, सारी चीज़ों आपको वहाँ मिल जाएगा. तो सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है. Next line says a variable is an item of interest that can take on many different numerical values, and the last part is a constant has a fixed number value. So data. Statistical data are usually obtained by counting or measuring items. More data can be put into following categories. So we have two categories. We have qualitative data and we have quantitative data. So what is qualitative data? Data are the measurements that each fall into one of the several categories. For example, hair color, uska group, and other attributes of the population. For example, equality measure करनी है. For example, to measure quality, here you can say his hair color, her hair color, which religion does he or she belongs, and various other types of things come into quality or qualitative data. The next part is quantitative data. Data are observations that are measured on numerical value. For example, distance travel to college, number of children in a family, and etc. Like I already said, uh, size of the family, weight of the family. This all can be in the quantitative data, which has a quantity defined to it. So qualitative data are generally described by words or letters. They are not as widely used as quantitative data because many numerical techniques do not apply to qualitative data. What it says, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि क्वालिटेटिव डाटा जो होता है उसके साथ वर्ड डिस्क्राइब होते हैं या लेटर होते हैं, क्योंकि उसमें कोई हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल टेक्निक नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, इट डज नॉट मेक सेंस टू फाइंड एन एवरेज हेयर कलर और ब्लड टाइप. कोई एवरेज आप नहीं निकाल सकते, एवरेज हेयर कलर ये है. इज इट नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल. Qualitative data can be separated into two subgroups. It has two subgroups. It have dichotomic. It takes a form of a word with two options, gender, male or female. Yes या no. इसमें दो आंसर्स हमारे पास. Dichotomic में then we have polynomial. It takes the form of word with more than two options: education, primary school, secondary and university. So if we have more options, ज़्यादा options है, two से ज़्यादा options हैं, it will fall into the category of polynomic. If we have only two options, then it will fall into category of dichotomic. So this is all our qualitative data. Then we have quantitative data. What is quantitative data? Quantitative data are always numbers and are the results of counting or measuring attributes of population. For example, size, for example, weight, for example, height. This all is measured in quantity. So quantitative data can be separated into two subgroups: discrete and continuous. So what is discrete and what is continuous? It is the result of counting the numbers of students of a given ethnic group or a class. The number of books on a shelf, discrete, like 1, 2, 3, 4, 5. There are 10 books in our house. For example, there are 40 books in a shelf. For example, there are 100 students in a class. This is all discrete. What is continuous? It is the result of measuring distance, travel, weight, or luggage. For example, I traveled 29.3 kilometers yesterday. My weight is around like 77.5 kgs. So this is all continuous data. It has a continuous line. So these are the types of variable we have: qualitative data, quantitative data. It has two types: dichotomic, polynomic.
quantitative are discrete and continuous, and at the below part has its example on it. So I don't know how to do statistic, but it doesn't matter because I didn't have data. So शुरू से बात कर रहा हूँ, अगर data नहीं होगा तो फिर मुझे statistics भी मैं नहीं कर सकता. So then we have numerical presentation of qualitative data. It can be in the table form, pivot table. It can be in the contingency table. You should know how to convert absolute values to relative value. We will see in our next lectures. We have frequency distribution, numerical presentation of quantitative data. Frequency distribution shows the frequency or number of occurrence in each of the several categories. Frequency distributions are used to summarize large volume of data. When the raw data are measured on a qualitative scale, either interval or ration. Categories or classes must be designed for the data values before a frequency distribution can be formulated. So this is all definition. We will see how practically we can design, we can use our data into qualitative form or in the quantitative form. Next is charts and graphs. Frequency distribution are good ways to present the essential aspects of data collection in concise and understandable terms. Pictures are always more effective in displaying large data collections. For example, हमारे पास 2 लाख लोगों का या 20 लाख लोगों का डेटा है. अब हम उनको जाहिर सी बात सबका अलग अलग दिखाना मुश्किल है. इन द पिक्चर फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंट इट. फॉर एग्जांपल अगर हम बार चार्ट रह रहे हैं तो हम उसका बता सकते हैं ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इस एज ग्रुप में लाई करते हैं, अदर स्टूडेंट्स इस एज ग्रुप में लाई करते हैं. इट इज वेरी इजी टू एनालाइज एंड समराइज if we are using the picture form. So this is our first picture form. It is histogram. It is frequently used to graphically present interval and ratio data. It's often used for interval and ratio data. The adjacent bar indicates that a numerical range is being summarized by indicating the frequency in attributively chosen classes. So अभी हम उसको next lecture में देखेंगे इंशाल्लाह कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं, किस तरीके से हिस्टोग्राम की डेफिनेशन है, किस पर अप्लाई करते हैं. ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन है. देखो आप सिर्फ इसको अपने स्क्रीन पर देख रहे हो तो एक फिगर है हमारे पास. इट सेज द इनकम इन डॉलर्स, कितने लोगों की कितनी इनकम है. फॉर एग्जांपल हमारे पास $20 to $30 वाले अराउंड 5 लोग हैं. $30 to $40 वाले भी हैव अराउंड 15 पीपल, 17 पीपल. $40 to $50 वाले जो हमारे पास जो है वो अराउंड 23-24 लोग हैं. $50 to $60 वाले हमारे पास अराउंड 28 लोग हैं. इसी तरीके से 60 to 70,000 वाले हमारे पास जो है 15 के करीब हैं. सो ऑन. सो इट शोज एग्जेक्टिव इनकम्स फॉर अ कॉर्पोरेशन. तो कॉर्पोरेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या इनकम है. अब मैं सबको इंडिविजुअली बताता तो बहुत टाइम लग जाता. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ये इनकम ले रहे हैं. तो व्हाट आई डिड, मैंने क्लास बना दी कि 20,000 से $30,000 वाले लोग इतने हैं मेरे पास. 5 लोग हैं. 30,000 से 40,000 वाले मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 17 लोग हैं. मेरा डाटा जो है इजीली प्रेजेंट हो गया. इसको बनाएंगे कैसे इंशाल्लाह मैं आपको बोर्ड पे इसको बताऊंगा किस तरीके से बनाना है. देन वी हैव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. Frequency polygon, another common method for graphically presenting interval and ratio data. Very easy. To construct a frequency polygon, mark the frequencies on vertical axis and the values of the variable being measured on the horizontal axis with the histogram. If the purpose of presenting in comparison with other distributions, the frequency polygon provides a good summary of data. So what is, please see. So exactive income ही है और हमारे पास उसी को देख रहे हैं. 15,000 वाले लोग शायद 0 हैं. 25,000 वाले लोग हमारे पास अराउंड 5 हैं. 35,000 हमारे वाले जो हैं वो अराउंड शायद 15 हैं. इस तरीके से ये पूरा ग्राफ बना हुआ है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है कि इतने लोग इसमें हैं, इतने लोग इसमें हैं, इतने लोग इस कैटेगरी में आते हैं. तो ये और थोड़ा बेसिक हो जाता है और आसान हो जाता है. इसके जो हमारे पास आप देखें एक्स एक्सिस पे इनकम लिखी हुई है. इनकम जो है वो कंटिन्यूस उस पर नहीं लिखी हुई. 15, 25, 35, 45. हिस्टोग्राम वाले के अंदर हमारे पास इंटरवल बना हुआ था 10 to 20, 20 to 30. इसके अंदर इंटरवल नहीं है. एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव फ्रीक्वेंसी व्हिच टेक्स 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. नेक्स्ट इज ऑगाइव. इसको ऑगीव भी कहते हैं, उसको अलग तरीके से भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं अलग. अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव का मतलब कि सबको कलेक्ट कर दिया आपने, एक साथ कर दिया. तो ये करेक्टिव वे में आपको दिखा देता है और इसका ग्राफ जो है हमेशा अपराइजिंग या फिर फॉर एग्जांपल ग्लो राइजिंग होता है. ऑगाइव इज यूज्ड व्हेन वन वांट्स टू डिटरमाइन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन
Observation is above or below a certain value in distribution. Next, we have first cumulative frequency distribution is constructed. The third, we have cumulative frequency are plotted at the upper class limit of each category. Very important point. Ogive can also be constructed for a relative frequency distribution. जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए इसको हम देखेंगे किस तरीके से जो है वो हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में देखेंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल. आप देख रहे हैं इसका अपवर्ड स्लोपिंग है. 20,000 वाले लोग हमारे पास एक भी नहीं थे. 30,000 वाले हमारे पास शायद 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे. 40,000 वाले हमारे पास या 40,000 तक 25 लोग हैं. 50,000 तक हमारे पास तकरीबन 47 लोग हैं. तो सो ऑन इट कंटिन्यूज. और इनकम लेवल इसमें डिफाइंड है, फ्रीक्वेंसी इसमें डिफाइंड है. Next, we have very important way to represent it, that is pie chart, or most frequently we use होता है. The pie chart is an effective way of displaying the percentage breakdown of data by category. Useful if the relative size of the data compounds are to be emphasized. Pie charts also provide an effective way of presenting ratio or interval scale data after that they have been organized into categories. Very easy and very good way to represent a data. This is a pie chart. So, for example, this shows expenditures of a company. So, एक company के जो है वो around 6 या 5 expenditures हैं. First is wages, then we have raw materials, shipping, overhead and miscellaneous expenses. So, अब इसको कोई भी जो हायर मैनेजमेंट होती है जब उसके पास ये पाई चार्ट जाता है तो वो एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो मेजॉरिटी यहाँ लग रहे हैं, यहाँ पे कम लग रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं. उस बेस पर डिसीजन मेकिंग बहुत आसान होती है. फॉर इंस्टेंस आप देखें तो द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द एक्सपेंस है फर्म का वो इज ऑन रॉ मटेरियल्स, ठीक है, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है. अब इसको देखना पड़ेगा फर्म को भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहाँ पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं. सो इस बेस पे हमारी डिसीजन मेकिंग हो सकती है. नेक्स्ट वी हैव बार चार्ट. व्हाट इज बार चार्ट? Another common method for graphically presenting normal and ordinal scale data. One bar is used to present the frequency for each category. The bars are usually positioned vertically with their bars located on the horizontal axis of the graph. Bars हमारे पास horizontal axis पे होती हैं. इसके बाद example में देखेंगे. The bars are separated and this is why such a graph is frequently used for nominal and ordinal data. जो nominal data होता है तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं. द सेपरेशन emphasize the plotting of frequency for discrete categories like this. So bar chart आप देखें फॉर एग्जांपल हमारा फेवरेट कलर, एक क्लास में 32 लोग हैं, उनका फेवरेट कलर फॉर एग्जांपल रेड, ठीक है. रेड के हमारे पास इट सेज के 12 लोग जो है वो रेड को पसंद करते हैं. अराउंड 8 लोग हमारे पास ऐसे ग्रीन को पसंद करते हैं. अराउंड अगेन 8 लोग ऐसे तो ब्लू को यूज करते हैं एंड सो ऑन. 4 जो है वो येलो को यूज करते हैं. तो बार चार्ट जो है वो इक्वली बता सकता है कि भाई जो स्पेसिफिक कैटेगरी है कितने लोग कितना पसंद करते हैं, या जो भी हमारे पास क्वेश्चन हो या सिनेरियो उसको बेस पे बार चार्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं. एक क्लास के अंदर एक पोल हुआ फॉर एग्जांपल कि किस किस को कौन से कलर्स पसंद है, तो उसका रिजल्ट आपके पास इजीली बार चार्ट की फॉर्म में अवेलेबल हो गया. नेक्स्ट इज टाइम सीरीज ग्राफ. The time series graph is a graph of data that have been measured over time. ठीक है, time to time. For example, आप देख रहे होते हैं weather results, time पे depend होते हैं, even hours based भी होते हैं. weather जो है बहुत एक अच्छी example है इस पे, time series पे. इसी के साथ आप stock को time series पे देख सकते हैं. Majority examples आपके पास available हैं इस पे. The horizontal axis of this graph represents a time period and the vertical axis shows the numerical value. यानी कि जो horizontal आपके पास होता है horizontal axis that shows आपका time period and the vertical axis shows the numerical value like this. ये आपके पास एक time series है. For example, it shows corporate revenue 1981 में जो हमारी जो भी फर्म है उसका अराउंड 7 मिलियन रेवेन्यू था. फिर 82 के अंदर इट रीच टू 16, फिर वो नीचे आ गया, फिर बढ़ गया. यानी कि टाइम वाइज बता रहा है कि भाई इस साल इतना था, इस साल इतना था. इसको आप ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं. यू कैन डू क्वार्टरली बेसिस, यू कैन डू मंथली बेसिस, यू कैन इवन डू इट इनटू डेज वाइज, वीक वाइज, इवन यू कैन डू इनटू आवर वाइज. तो टाइम सीरीज जो है वो बिल्कुल एक कंटिन्यूस उसके अंदर होती है हमारे पास. सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड
This was our first introduction lecture. In the next slide, I will show how to make all these graphs and how can we do their example. I hope अभी जो मौजूदा हमारे पास पैंडेमिक सिनेरियो है इसके अंदर आप लोग इसको देखेंगे इंशाल्लाह. You will go through it, you will do your practices, we will provide you the assignments and other things. Hope you all are fine, and please take care of yourself in this scenario. Overall इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो, you feel free to ask me. Thank you very much.